Preparations are in full swing in Patna for the grand swearing-in ceremony of Nitish Kumar as the Chief Minister for the 10th time this Thursday. And amidst the preparations, let's discuss the much-hyped Bihar elections of 2025 ended not with a political shake-up, but with a reaffirmation of the state's long-standing bipolar contest. Despite Prashant Kishor's Suraj party drawing big crowds and big expectations, it failed to convert enthusiasm into seats. The crowds did not turn into votes, leaving the battle squarely between the NDA and the Mahagathbandhan. The Congress party, in fact, slipped further, shrinking from 19 seats in 2020 to just 6 in 2025, weakening the Mahagathbandhan and reinforcing the dominance of the JDU, the BJP and the RJD. While the Mahagathbandhan's vote share remained virtually unchanged from 2020 to 2025, the NDA jumped from 37.6% to 46.6%, almost like a 10% increase. And this surge came largely from the BJP and the JDU, increasing their vote share despite contesting on fewer seats and from formalization of their alliance with the LJP, which had played the role of a spoiler in 2020. But let me give you a sense when we say that is Bihar 2025 now a story of a beginning of a trend in which there will be more and more bipolar contest. Why are we saying that Bihar is moving towards bipolarity? Let me give you a sense. This is how the role of the others is shrinking in the state of Bihar. In 2015, the NDA had a vote share of this, the Mahagathbandhan at 28%. I think this is going to be a reverse of that number, but finally the number was at 24%. Again, if you look at it, the vote share at present stands at this. The vote share of others is just 15%. And as far as the NDA is 47%, the Mahagathbandhan remains at 38. So this move of 7% is the gain which has come towards the NDA. It is gaining not from Mahagathbandhan, which remains consolidated in comparison to their score of 2020, not much of a shift. It is this shift which is coming in now of close to 7% shift, where the others, the role of the others is shrinking. Let me give you a sense of the strike rate here. The others' strike rate has shrunk further to just 2%. As far as other parties are concerned, the NDA and the Mahagathbandhan at 14%, NDA at that percent. Now, the party-wise, why are we saying that it is increasingly becoming a bipolar contest between the two big alliances, that is the NDA and the Mahagathbandhan, is because of this map. The Suraj polled just 3.4%. As far as the others are concerned, it was further down. These are smaller parties which had contested. The rest includes your MIM, the BSP and others. The vote share was largely between the two big alliances. The bigger pie went to the RJD with 23.4%. That was because of its Yadav and the Muslim vote remaining more or less intact. The BJP, the JDU increased their vote share from the last time, and that had purely come in from the other side. If we look at the VIP party, it stands at 1.4%. Remember, in 2020, the VIP was part of the NDA. At that time, they had won 4 seats. This time, despite polling 1.4% of votes, its seat was just 0. Let me go straight to Patna, from where Mukesh Sahni, the VIP president, the party chief, is joining us now. Mukesh Sahni, thank you for your time. मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा आपसे कि जब आप NDA के साथ थे 2020 में, आपका परफॉर्मेंस शायद बेहतर था क्योंकि आप 4 सीट जीते थे. इस बार आपका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है 2025 में. आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या गलती हो गई? नहीं, देखिए, बिहार में जो मैक्सिमम सीट हम लोग गठबंधन के सारे साथी जो है चुनाव हार चुके हैं, और बिहार का जनादेश जो है वो लोकतंत्र में जनता जो होता है वो सरकार के काम के आधार पे चुनते हैं, ठीक है. लेकिन ये जो सरकार जो चुना गया है वो काम के आधार पे नहीं चुना गया है. 10,000 रुपया के आधार पे ये सरकार को चुना गया. जो मोदी जी के भाषा से अगर कहेंगे तो रेवड़ी बांट के सरकार बनाना, और 1.5 करोड़ महिला को, हमारी माता बहन को ये बताया गया कि हम
सरकार में आएंगे, 2 लाख रुपया देंगे, अभी 10,000 रुपया हम दे रहे हैं पहली किस्त। तो इस आधार पे हमारी माता बहन जो है, जो मोदी जी पे या नीतीश जी पे भरोसा किए हैं, उनको वोट दिए हैं और बड़े पैमाने पे राज्य के यूथ जो है वो हमारे साथ है। चाहे जाति धर्म जो भी हो, बड़े तबके के यूथ जो है हमारे पास है, क्योंकि 39% वोट हमको प्राप्त हुआ है। पिछले इलेक्शन में 37% वोट महागठबंधन को प्राप्त हुआ था, उससे भी आगे बढ़ के हम 39% वोट प्राप्त हुआ है। ये सही है कि वो लोग 200 पार जीते हैं। कोरोना काल में भी बिहार के या देश के लोग परेशान थे। उस समय में सरकार के पास ये नहीं था कि हम लोगों को मदद करें, 10,000 रुपया दे, लेकिन इस समय में वो एक पॉलिसी के तहत उनको 10,000 रुपया दिया, जिसके कारण वोट प्राप्त हुआ है। और इससे पहले एसआर के मामले में भी बहुत सारे हमारे लोगों को वोट काटा गया। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। बिहार में 18 लाख नए वोटर को हम लोगों ने बनाने में कामयाब हुए। जो 70-70 साल के लोगों को वोट कट गया था, उसको हम लोगों ने फॉर्म 6 के जरिए हमने बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका जो है महागठबंधन का, जो वोट नहीं जोड़ा पाए, जो लोग प्रदेश में नहीं थे, दूसरे राज्य में थे। तो ये सब मिला के और लेकिन साहनी साहब, आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते और आपने 10,000 रुपए जो महिलाओं को मिला था उसकी बात कर ली और एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन जब मैं जमीन पर थी और मैंने काफी बिहार घूमा है, वहां पर तो महिलाएं 20 साल में जो नीतीश कुमार ने किया है वो सब वो गिना रही थी। ये भी बताया उन्होंने कि 2006 में उन्होंने पोशाक दिया, साइकिल दिया, उसके बाद 50% आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायत में, और उनका एक डर था कि अगर तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आएगा। तो क्या तेजस्वी यादव जंगल राज कि जो नैरेटिव है उससे अपने आप को पीछा नहीं छुड़ा पा रहे? नहीं, देखिए, एक परसेप्शन बनाया गया है। और जंगल राज किसने लाया? जंगल राज किसने लाया? जंगल, कौन सा जंगल में से जानवर बिहार में आकर ये उधम मचाता था, ये बिहार के सभी लोगों को पता है। 90 से पहले लोगों को चप्पल पहन के और उसके दरवाजे पे जाने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता था, खेत में काम करा के उनको मजदूरी नहीं दिया जाता था। जब लोग समझदार हुए, अपने अधिकार की बात करने लगे, तो उनको लोगों ने जंगल राज बताने लगा, ठीक है। जबकि जो उस समय के जो लोग थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे और अभी सब चीज बदल चुका है। अब इसको लेके बार बार ये बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये बताएं कि 20 साल में निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि नीतीश जी एक अच्छे राजनेता है, उन्होंने महिला के लिए, माता बहन के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग करके अभी तक उन्होंने काम किया है। लेकिन वो ये भी तो उसको सोचना चाहिए कि बिहार के युवा के लिए उन्होंने क्या किया। जो 20 साल में युवा, आप देखिएगा 90 का समय का या 2005 से पहले हमारे राज्य से कितने लोग दूसरे प्रदेश में जाके रहते थे। वही बड़े बड़े लोग रहते थे दूसरे प्रदेश में, जिनको अच्छी जिंदगी जीना था। इसलिए वो 2005 से 90 से लेकर 2005 में अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या बैंगलोर में जाके लोग रहते थे। लेकिन 2005 से लेकर लेकिन 2025 में जाके देखिए, मुकेश भाई, हर एक घर से हमारा सवाल ये युवा है जो कि जो साथी भी है आपने बोला, आप युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा को विश्वास आपकी बातों पर नहीं हुआ, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि बिहार की जनता चाहती है एनडीए को। आप अपनी बातों से उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। को कन्विंस किए हैं। खास करके बिहार के यूथ जो है वो हम लोगों से काफी कनेक्ट हुए हैं। रोजगार के मामले में, उद्योग के मामले में लोग हमसे कनेक्ट हुए, तो ही ना मेरे पास 39% वोट आया। मेरे लिए तो कोई लंदन से या अमेरिका से आके तो हमको वोट दिया नहीं है। और जो हमारे आधार वोट की अगर बात करते हैं कि हमारे पास ये वोट है और ये दम है, तो वोट हमारे 20% के अंदर का वोट है। तो आखिर अगर 20% से हमारा जो आप कह सकते हैं कि कास्ट वाइज या आपके सपोर्टर ये है, तो वो हमारे 20% का ताकत है। अगर हमारे पास 39% वोट मिला है, तो ये मान लीजिए कि मेरे पास सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने हमको वोट दिया है। ठीक है, ये मेरा है कि दूसरा हम सवाल ये लेकिन होता है। लेकिन 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 अब मिला है। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। ये उम्मीद करी जा रही थी कि आपके आने के बाद, ये महागठबंधन का कैलकुलेशन था कि अगर आपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया जाएगा तो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे हैं वो थोड़ा टूटेंगे, झटकेंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। मल्ला निषाद कम्युनिटी का थोड़ा ही वोट महागठबंधन को मिला है। आपको क्या लगता है कहां पे फेलियर रहा है?
देखिए, मेरे ये आप बोल रहे या कोई परसेप्शन बना रहा है तो बनाएँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी वोट जो है हमने हमेशा कहा कि मेरे पास 11% वोट है। बिन, बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी 22 उपजाति में 11% वोट है। 11% का पोलिंग कैपेसिटी 7% है और 7% वोट हमने महागठबंधन को दिया है। ये पेपर पेन लेके बैठिएगा, आपको साबित हो जाएगा कहीं 90%, कहीं 85%, कहीं 80%, कहीं 100%। हमारे लोगों ने एज ए सन ऑफ मल्लाह को डिप्टी सीएम बनाने के लिए वोट किया है। लेकिन हमने 7% का दावा कर रहे हैं, हम 39% या 42% लाने की बात हम कभी नहीं कहा। और रहा कि 7% हमने वोट दिया तो ही तो 39% वोट आया है। अगर अगर हमारी वोट अगर नहीं मिलता तो ये 39% वोट कैसे हो जाता? कोई जादू तो है नहीं। हम मोदी जी के जैसा कोई जादू तो करते नहीं है। हमारे पास जो वोट अगर 39% आया तो कहां से वोट आया? लेकिन तो मेरा सवाल अब मेरा आपसे ये वोट है, हो या सुनिए सुनिए सुनिए, 2029 के लोकसभा चुनाव में या 2030 में जब बिहार में चुनाव होगा, आज से 5 साल के बाद, तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? क्या आप इसी अलायंस के साथ जुड़े रहेंगे या जिस तरह से आपने 5 साल पहले भाजपा के साथ आप थे, इस बार आप महागठबंधन के साथ हो गए, तो क्या आपने अपना सोचा है कि क्या करने वाले हैं? ये सब बोल के आप लोग हमारा हमें बेइज्जत करते हैं। हम ऑलरेडी विचार से बंधे हुए हैं। हर हाल में महागठबंधन के साथ थे, हैं और आगे राहुल गांधी जी के साथ हैं जब तक देश में बदलाव नहीं लाएंगे। देश में तानाशाह का जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे। जो हमारे युवा के रोजगार छीनता हो, जो हमारे लोगों को गुलाम बनाना चाहता हो, जो 5 किलो चावल देकर ये बताते रहे कि तुम गुलाम हो, तुम्हारा विकास यही है, ऐसे लोगों को जब तक हम देश से बाहर नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में हम लोग आने वाले समय चलिए में चुनाव लड़कर और ऐसे लोगों को बाहर करेंगे जो गरीब को उनको चलिए, आखिरी हमेशा सवाल गुलाम मेरा आपसे ये है कि लगभग 48 घंटों में जो बिहार से खबर आ रही है वो इस पर कि तेजस्वी यादव की जो बहन है उन्होंने परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है और खास करके उन लोगों पर जो तेजस्वी के इर्द गिर्द हैं, जैसे संजय यादव हुए। तो आप उन लोगों से मिलते रहते होंगे, तो ये जब उनकी बहन इस तरह का आरोप लगाती हैं तो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, इसमें देखिए हम लोग काम के सिलसिले में मिलते हैं और हम लोग एज ए अलायंस पार्टनर के तहत हम लोग मिलते हैं, तो हमें ऐसे कोई एहसास नहीं है। और हर पार्टी हर गठबंधन में थोड़ा सा नोक झोंक तो होता ही है। सब पावर सेंटर की ज्यादा पावर किसके पास होना चाहिए उसके लिए नोक झोंक होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये सब ऐसी कोई बातें नहीं है। रहा कि पारिवारिक, हमारे रोहिणी दीदी ने कुछ बोला है, हमने टीवी मीडिया में भी देखा है। इस पे उनके परिवार के लोग ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इसमें मुझे टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा। मैं तेजस्वी जी को भी सम्मान करता हूँ, रोहिणी दीदी को भी सम्मान करता हूँ और मेरे अच्छे संबंध है, संजय यादव जी से भी अच्छे संबंध है। तो हमें इसमें बीच में कुछ भी बोलना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा और मुझे लगता है कि सब समय रहते हुए सब चीज सही हो जाएगा। ठीक है मुकेश भाई, thank you for joining us. Let me bring in Dr. Sanjay Jaiswal, BJP's chief whip in the Lok Sabha, member of parliament also and former BJP president of Bihar. Dr. Jaiswal, congratulations. It's a huge victory. You can certainly smile and do calculations as to what really has happened in Bihar. The Prime Minister, Dr. Jaiswal, has said something very interesting on the day of the results when he was addressing the Karyakartas. He said that बिहार अब जाति पे वोट नहीं करता, तो ये जो मैंडेट है, is that the way BJP is seeing the mandate, that the state has moved beyond caste? This state has always moved beyond caste after 2005. What we have seen was the development, was the main agenda. That was the reason why we won with more than 200 seats in 2010. In 2020 also, if you calculate the votes of NDA plus Chirag plus Upen Kushwaha, we would have done the same thing which we had done at present. It's MG Mahagathbandhan votes were 37% last time. This time also it was 37%. It was a vote share together with all the NDA partners, which has increased drastically, and that has turned out into more than 200 seats. They've already done this in 2010, and we have repeated in 2025. So it's the vote of NDA has been always constant. The people who are having faith on development, those people who have faith that Bihar should be run by Sushashan, we should not allow Jangal Raj to come here.
So these are the things. We are happy Okay. that they are, Yes. yeah. Dr. Our Jaiswal, opposition is also, very happy that they are blaming SIR, they are blaming other factors which were non-existent. We are also happy. Let them, don't introspect them, and they should blame all these things, and they will never get corrected, and we will always do the same thing. no, my question is, Bihar caste remains the fulcrum, but are the caste groups loosening or opening up? Because if you look at the vote share of both the sides, NDA and the Mahagathbandhan, it remains at the, you have gone up, but Mahagathbandhan remains at 38%, something that they got last time. So my question is that have you polled in from the others? Where is that number coming from? And also because, you know, there is a 6% direct addition which is coming in from Chirag Paswan's LJP. So also Upen Kushwaha also scored roughly 4% of vote last time. And when we all were together, we had done the same thing which we did it in 2010. In Bihar, the issue of Jungle Raj will always remain. And the day when the national executive of RJD happened, and they said, Shahabuddin Amar hai, Taslimuddin Amar hai. And look at the present, we were not knowing, but after this Tejasvi Yadav's sister episode, who is Ramiz? Ramiz has more than 14 cases. He has been a murderer. The person who has been murdered, his own brother came from Balrampur and he gave interviews to different TV. So you are still not living that era which has ruined Bihar. Remember in 2005, per capita income of Bihar was mere 6,000 rupees per annum. And we have started what Bihar was in 1947. And from taking there, we reached 70,000, which is more than 10 times in these 20 years. That shows we are pro-development. People believe in us, especially the women, whom through Jivika, Nitish has given a lot of strength. They have started earning. They have become independent. I remember my sister got married in 1996, and the people came from Mumbai. Their first question was that, does Bihar don't have any women? We came from Patna to Betia, and we didn't saw even one woman on road. From that condition, seeing in villages all girls moving through bicycle just in 2008, Okay. that has changed the Bihar. Okay. Dr. Jaiswal, we are witnessing a changed Bihar for sure. I certainly hope as a Bihari that the state grows with further fervor and it grows with enthusiasm in future. Thank you for your time. I'll keep bothering you during the upcoming parliament session as well, because you are the chief whip of the BJP in the Lok Sabha. Sajan Kumar and Amitabh Tiwari join us. Amitabh Tiwari, caste has been the organizing principle of electoral politics in Bihar. It has shaped alliances, decided strategies, and candidate selection for decades. Are you sensing a change this time around? Yeah, there is a very interesting trend, Maria. Up till 2020, almost on 90% of the seats, the same caste or social group candidate used to win the elections. We are putting out your So there was graphics a whole, only, Amitabh Tiwari. Just look at yeah, this. Exactly what you had yeah, said. correct. So essentially, The other one, please. irrespective Yes, of this one. parties, a particular caste or community was winning from those seats. Now, in 2025 or up to 2025, what has happened is that the hold of particular caste on these seats has declined, and from 90%, this number has come down to 60%, which is a big decline in that sense. So, on 60% of the seats, still that particular caste community holds influence, but it has significantly reduced from 90% to 60%, which means the balance 30% are largely voting on development, issues, beneficiary status, vikas, etc. So I think this is a big trend which we are witnessing. That is reduction of hold of caste on the particular constituencies and at the state level.
Okay, that's fascinating, Sajan. The emerging theme is clear. Bihar perhaps is standing at crossroads. Uh, yes and no, both at the same time, because we do see that there is a trend to vote by bringing under consideration factors beyond caste, and that beyond factor or a plus factor is one, leadership, two, the welfare schemes, which becomes the pull factor for genders and so many castes. But do remember that in Bihar, we are also witnessing, and as Amitabh Tiwari is talking about the 30%, who are these 30%? Right? Overwhelmingly, and this is my insight, that overwhelmingly these 30% are the unanchored caste. When I say unanchored caste, which means the caste who do not have significant leaders. So, for example, you do not expect a Paswan voter, to override Chirag Paswan's stature and directional clue. You do expect overwhelmingly the EBCs and many of the Dalit leaders who do not witness, right? Bihar has 22 Dalit caste. But how many Dalit leaders are there? You have Chirag Paswan, you have Jitan Ram Majhi, and you may have Rajesh Ram, etc. But beyond that, still for almost 15 to 16 castes who are minuscule, you do not have any directional clarity. So these unanchored castes will always vote for caste plus schemes, leadership, etc. But the centrality of the anchored caste, I think, is going to stay for some time. Degree may differ. Okay, so Amitabh, let me give you the last word. Caste remains relevant, but a new calculus is taking shape, one that demands flexibility, inclusiveness, and imagination. Is this a fair assessment then? Of course, representation was a big theme when we traveled across Bihar this time. You must have also realized this largely amongst the minority community. We have seen that this feeling was there. However, people are giving a chance to parties, leaders also at constituency level who show a vision for the future, who are not only seeking votes in the name of caste, like NDA, for example, also, which was not just seeking votes in the name of the bigger or the grander social coalition it had. The votes were sought in the name of a new Bihar or on the manifesto points which it has promised to the people of Bihar. So I think the people of Bihar are also gradually, this election is very important in that sense. It could signal a big pivot in years to come from traditional caste-based politics to development-oriented politics or voting. Yes, absolutely fascinating how Bihar is ushering in a new era here. Thank you so much for joining us, Amitabh Tiwari and Sajan Kumar. The era when caste alone could script election outcomes is fast fading. The future belongs to those who can build broader alliances and address the complex aspirations of voters beyond traditional fault lines, is a message coming in from Bihar. Thanks so much for watching, and I'll be seeing you tomorrow.